चले हम लोग चलते हैं आगे। क्या लिख रहे थे लास्ट टाइम? डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, उसी डिबेट पढ़ते हैं हम लोग ना। ओके, ओके। So what we want administration should display which kind of attitude? Democratic या bureaucratic? Democratic attitude. But they can't be truly democratic because they are bureaucratic. Fine. So we notice कि यार वो bureaucratic attitude तो दिखता है, क्यों दिखता है? That is a different debate. We will see that. Fine. Anyway, change the paragraph. Few more things are there that we have to write. We want we want we want democratic attitude from bureaucracy. We want democratic attitude from bureaucracy because in democracy citizens are the master. Citizens are the master. But excessive bureaucratic rigidity may weaken the democratic spirit. May weaken the democratic spirit. When we say democratic attitude, we mean that bureaucracy must show commitment toward liberty, equality, citizen participation, transparency, accountability, inclusiveness, and respect for human dignity. Change the paragraph. Over the years, many initiatives MANY initiatives were taken up. To introduce transformation in bureaucratic attitude. For instance, point number 1, RTI, Right to Information Act.
RTI, Right to Information Act 2005, which which attempt to reduce secrecy, and corruption, by promoting transparency. Now there could be a separate discussion on RTI. Fine. Point number 2, citizen charter that specifies service standards and timeline. Again, there could be a separate discussion on citizen charter. Third, social audit, which enable social audit means society will audit. For example, we have an office called CAG, Comptroller and Auditor General of India, and the task assigned to CAG is to audit the various accounts of government. Now, who will appoint CAG? Government. Who will be the head of the CAG? The entire institution, IAS officers. And now if they are reviewing and auditing the accounts of government, one IAS officer is auditing another IAS officer. So there is no transparency. They are accountable to themselves. So concept came social audit. Instead of auditing by senior authority, common people will audit. It is right now implemented in MG Narega scheme that Panchayat should audit that how much fund was allocated, where it was used, how it was used. But when we come to reality, we found there is no such auditing taking place in the right order. Panchayat wale are doing auditing only on papers. They just submit the paper and sign the paper ki haan auditing ho gaya hai. Villages are not aware of this. So you can write social audit, which enable public inspection, of government schemes, and ensures citizen participation in governance. Next point, new point, I think third or fourth. E-governance. That is a brilliant attempt. To reduce the middleman. Between people and government. It reduces delays. Corruption. Corruption. And human discretion. And human discretion. In other words, it is
online delivery of services. In other words, it is online delivery of services. Online delivery of services. It is based on Gandhian principle. Gandhian principle. Have you studied Gandhi as a political thinker? He was preaching something called stateless society. Now it's not possible to have stateless society. If there is no state, there will be anarchy in the society. Gandhi was very interesting personality. He can't preach the people that what is the meaning of less government, more governance. He can't preach the people. He preached a stateless society. There will be no one to rule over you. You will be the master of yourself. Stateless society. Ram Rajya. It would be difficult for people to understand stateless society. So he gave slogan Ram Rajya. Ram Rajya matlab a Rajya without the Ram. Ram is king. Rajya means state. A state without king. A state without society. A state without society. I hope you're getting this. But when we come to practical aspects of Ram Rajya, it means role of state will be minimum in people's life. Role of state will be minimum in people's life. So scope of liberty will be more and interference of government will be less. In modern terminologies, we call it more governance and less government. More governance and less government. Many services are working on this. Yes or no? On this system. Just like you have fast tag system. There is no need to have conversation with the workers at toll plaza. Just recharge your fast tag or nikal jao. People are themselves filing RTI. There is no need to go here and there to the government office and officers. Fine with this. So you can write it is based on Gandhian principle. That is more governance, less government. Government means authority. Governance means services. More services with less interference of government. That we call more governance, less government. Fine. ETC. Change the paragraph. For sure, modern governance. For sure, modern governance must include the democratic aspects in their behavior. Democratic aspects in their behavior. But the practical reality is quite complex. I hope you're getting this. Yes or no? You can give a small heading, the recent initiatives. RTI, Citizen Charter, these things are quite old. Recent initiatives. Right, point number 1. Digital India Mission. That is technology enabled governance. Digital India Mission, technology enabled governance. Pragati platform. Point number 2. Pragati platform. That is, you can read more about these things. Fine, I'm just giving the hint. Pragati platform, that is direct
monitoring of projects by Prime Minister, by PMO, direct monitoring of projects by PMO. Aspirational district program, aspirational district program. Smart city mission, smart city mission. Next, mission Karma Yogi, mission Karma Yogi, mission Karma Yogi. That is capacity building and behavioral transformation and behavioral transformation for civil servants. For civil servants. Fine with this? So these are the few things that we wanted to discuss in the overall heading of attitudinal problem in administration. Fine with this? You can flip 1 or 2 page and then you can see, then you can read. We have written all those things that administration could show positive attitude, could show negative attitude. What kind of negative attitude is displayed by bureaucracy, that we have written. And then we entered into a debate. We want democratic attitude, not the bureaucratic attitude. Fine with this? And related things associated to that. Once again, we will come back to this in later sections. Right now we were discussing attitude, and hence we have written these things. Fine. When we discuss governance, administration, then again we'll come into that. Now the new heading is social influence and persuasion. Social influence and persuasion. Social influence and persuasion. Yes. What you understand these two words? What is social what is social influence? What is persuasion? क्या होता है ये? These are two tools to modify your attitude. These are two tools to modify your attitude. Social influence or persuasion. Social influence. You are observing someone in society. You are learning from their behavior, and the same attitude you are trying to inculcate in your personality. That is social influence. The best example is Motilal Nehru. The way he was inspired from Mahatma Gandhi, a very rich person, ultra rich. And many of his lifestyle pattern changed when he came in contact with Gandhi. Social influence, perfect example. Many leaders are inspired by Gandhi. Today political parties try to mobilize people. They try to persuade people, yeah, हमारे लिए वोट डालो. For that they create organizations, they create committees, they create booth structure, ward structure. Gandhi was doing all these things even before advent of electoral politics in India. Yes or no? He was the first election strategist of India. Don't you think? He was creating strategy for Congress. Whenever Congress won any number of seats in the parliament or in state assemblies, the direct man responsible for that was Gandhi. And you could see non-cooperation movement, it was followed by assembly election, Congress leader performed well. Civil disobedience movement, then elections, Congress performed well. Quit India movement and then elections, and again you could see. और ये सारे के सारे आंदोलन were programmed by Gandhi, launched by Gandhi, led by Gandhi. And when he withdrew the movement,
Movements disappeared. Movements disappeared. He said, I could create a movement even without Congress, just from a sand particle of the country. एक रेत के बालू से इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट करूंगा कि कांग्रेस सोच भी नहीं सकती. आई डोंट नीड कांग्रेस फॉर द मूवमेंट बिकॉज ही वॉज लिविंग विथ पीपल. Yes or no? He renounced everything. He renounced everything and living with people. So his emotional connect with people was very, very high, very intelligent Gandhi. He was against the untouchability and supported caste system. How it's possible? He was against the untouchability and supported caste system. Upper caste was following Gandhi, lower caste was following Gandhi. Obviously, it will never happen that each and every person is following you. Obviously, there will be critique, there will be criticism, there will be people who will hate you. So it will happen. Gandhi doesn't care about them. Fine, मेरा तो ऐसे ही है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ. You want to follow? फॉलो करो. You don't want to follow? तो अपने से कर लो कुछ. अपने से कुछ करते बना भी नहीं किसी से. That is the interesting point. कोई कुछ कर भी तो नहीं पाया. After चोरा चोरी कांड, Gandhi withdrew the movement. Gandhi withdrew the movement. Everyone started crying. It is a national calamity. Who said this? I think Subhash Chandra Bose. National calamity. आपने movement खत्म कर दिया. Gandhi said, हाँ हो गया, तुम चला लो, हो दम तो चला लो. Movement disappeared. Same happened in civil disobedience movement. Viceroy asked, I have planned round table conferences. Gandhi तो तभी जीत गए. Entire movement was based on salt. Salt is the issue. That you are not paying attention toward our needs. You are not listening to us. You are taxing the salt. उस पे आंदोलन हुआ कि आप हमारी सुनते नहीं हो. वाइसरॉय ने कह दिया कि ठीक है, सब बंद करो, अपन बैठ कर बात करते हैं. गांधी सेड, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. वाइसरॉय सेड, मुझसे नहीं, माय बाप, इंग्लैंड जाकर बात करनी है, हम क्या बात करेंगे. एंड देन ही प्रेजेंटेड हिज डिमांड. ये डिमांड से ये फुलफिल करो तो आंदोलन बंद करूंगा, वरना नहीं करूंगा. गांधी तो जीत ही गए आंदोलन. दे वर नॉट लिसनिंग टू पीपल ऑफ इंडिया. नाउ दे आर प्लीजिंग द पीपल ऑफ इंडिया कि मुझसे नहीं, माय बाप से जाके बात करनी है. Are you ever getting this? Gandhi influenced many politicians. Yes or no? And now see, all the successful politicians in India. देख लो, नरेंद्र मोदी सक्सेसफुल है या नहीं? कभी चिल्लाते, झगड़ते, जोर जोर से बोलते देखा है? काम, शांत, धीरे धीरे. योगी आदित्यनाथ, obviously he is doing miracle in UP as far as politics is concerned. You could see, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, शांति से. You could see राहुल गांधी, कोई सीरियस नहीं ले रहा था आदमी को. एंड देन ही लॉन्च भारत जोड़ो यात्रा. कांग्रेस का सीट डबल हो गया. कांग्रेस का सीट डबल हो गया. From 54 seats in Lok Sabha to 99 seats in Lok Sabha, emerged as the strongest opposition party in the Lok Sabha. Yes or no? Who preached all these things? No one preached. People are inspired, influenced by Gandhian ideology. Gandhian ideology. गांधी शोड द पीपल. लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों जैसे रहो. उस समय के लोग भूखे नंगे थे, गांधी भी धोती पहनकर घूम रहे आधे नंगे होकर. देख लिया हिंदुस्तान के लोग खाना भी नहीं है ठीक से, तो खुद भी उपास कर करके अपना शरीर भी खत्म कर लिया, एकदम मरी हड्डी. लोग कनेक्ट करते थे. वेरी स्मार्ट गांधी. यू कुड सी, राहुल गांधी ने भी देखा कि इतना बुजुर्ग तो नहीं हूं मैं, कुर्ता पजामा में लोग पसंद नहीं करेंगे. टी शर्ट पे आ गया आदमी, टी शर्ट पहन रहा है, दाढ़ी बड़ी कर ली. 5-10 साल पहले का राहुल गांधी देखो, कुर्ता पजामा क्लीन है. पीपल रिजेक्टेड हिम. आई होप यू गेटिंग दिस. हाउ टू कनेक्ट द पीपल, हाउ टू establish connection with the people. Who preach these things? No one is preaching. People are inspired from Gandhi. कि लोगों से कनेक्शन करना है, लोगों जैसे हो जाओ. सोशल इन्फ्लुएंस क्या है ये? सोशल इन्फ्लुएंस. So social influence is an instrument to mold or modify your attitude. I hope you're getting this, but listen it carefully. Social persuasion is not the deliberated attempt to change your behavior, to change your attitude. I hope you're getting this. Let's say we are discussing any topic in the class. I am just telling you the reality
or if it is not reality, I am provoking you to think, or if I am not provoking you to think, I am just explaining the two sides of the coin. I hope you're getting this, what I'm trying to tell you. We are discussing any topic and I'm just giving the two sides of a coin. You acquired the knowledge, you started thinking critically, well, बात ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है. Now your attitude became liberal. Your attitude became liberal. Education makes you liberal. If you're not liberal, sorry to say, you're not educated. Education will make you liberal. Education will make you flexible. Education is not that IIT, IIM and Oxford, Harvard से ये पढ़ा हुआ है. That is not education. वो तो literacy या count कर लिया आपने कितना पढ़े हो. If you are really educated, you will be liberal. You will be flexible. जिस पेड़ पर जितने फल होते हैं, जितने फलों से लदा हुआ वृक्ष है, वो उतना ही झुका हुआ होता है. जिस पेड़ पर जितने फल हैं, वो उतना ही झुका रहता है. अगर फल नहीं है, वही अकड़ के खड़ा रहता है. तो उसको दिखाना होता है ना, भाई सीरियसली लेने का मेरे को. बट इफ यू आर educated, knowledgeable, then obviously people will take you seriously. But if you are worried that people will not take me seriously, तो फिर आप उल्टी उल्टी हरकतें करोगे और लोगों को बताओगे कि भाई ऐसा है वैसा है. वरना फलों से आच्छादित वृक्ष तो झुके हुए ही रहते हैं. आई होप यू गेटिंग दिस. जिस पेड़ पर जितने फल, वो उतना झुका हुआ. जिस पेड़ पर इतने फल नहीं हैं, वो रहते तने तनाए. I hope you're getting this. Yes or no? You have acquired knowledge. Your way of thinking changed. Your way of thinking changed. It is a social influence. It is social influence. It was not a deliberated attempt कि तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा लिखो, तुम इस तरीके से एक बार देखो. It was just the regular conversation. And many people were changed over the time. They text कि यार पहले मेरे को ऐसा लगता था, बट नाउ आई थिंक लाइक दिस ओनली बिकॉज ऑफ यू. मतलब पागल है क्या, ऐसी बातें क्यों कर रहा है. आपने एक दिन ऐसा कहा था और फिर मैंने ऐसा देखा तो मुझे ऐसा ऐसा समझ में आया. मैंने कहा मुझे नहीं पता मैंने कब कहा, और मेरी कोशिश भी नहीं थी. हम तो दोनों तरफ से डिस्कशन कर रहे थे. दैट्स इट. आई होप यू आर गेटिंग दिस. So knowledge, information is a perfect tool of social influence. Observation is a tool of, observation is a instrument of social influence. ये सब चीज़ें देखकर हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज हो सकता है या हो जाता है. बट when it is a deliberated attempt, when it is a deliberated attempt to change your behavior or attitude, that is known as persuasion. That is known as persuasion. If I have preconceived a notion that I want to change your behavior, I want to change your attitude, then that is called persuasion. What we call it? Persuasion. No such intention, then it is social influence. If it is a deliberated thing, then it is a persuasion. And both will change your attitude. Yes or no? Yes or no? और one TV channel was explaining कि पेट्रोल का दाम बढ़ा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. उसने पूरा डिजिटल बोर्ड पर समझाया, एक न्यूज़ चैनल ने, कि लेट से आप पहले महीने भर का 10 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करते थे तो आपका बिल इतना बनता था. अब 4-5 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल, तो आपका बिल केवल इतना ज़्यादा बढ़ा है. इतना तो आप समोसा खा जाते हो मार्केट में. इट वॉज परसुएशन, ट्रू परसुएशन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. लोगों को परसुएट करने के अलग अलग तरीके हैं. कुछ इमोशनल होकर परसुएट करेंगे, कुछ डर दिखाकर परसुएट करेंगे. ये सुनो, अंधेरे का डर दिखाएंगे तभी तो उनकी टॉर्च बिकेगी. अंधेरे का डर नहीं दिखाएंगे तो टॉर्च कौन लेगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस. परसुएशन के अलग अलग तरीके हैं. इट कुड बी फियर, इट कुड बी इमोशनल अटैक. पीपल विल मेक यू सेंटिमेंटल. प्राइड आपके अंदर इन्फ्यूज कर देंगे परसुएट करने के लिए. बट ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल लोग करते हैं. आई वॉन्ट टू परसुएड यू, हाउ टू परसुएड. इमोशनल हो गया. समझ सकते हो तुम. 35 लोग की जान चली गई इंदौर में.
मेरे पड़ोस में बच्चा रहता था, मर गया, इमोशनल हो गए तुम। परसुएशन, डर दिखाकर कि अगर कांग्रेस वाले आए तो तुम्हारे नल की टोंटी ले जाएंगे। नल की टोंटी का साहब क्या करेंगे वो, किसी ने पूछा नहीं मोदी जी से, बट परसुएशन था वो। आई पर गेटिंग दिस, डर दिखाकर, कहीं पे प्राइड दिखाकर। मोदी जी वर स्पीकिंग इन बिहार कि महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीत लिया, वो हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, फलाना कर लिया। और औरत एकदम सुन के एकदम टाइट होकर घर गई। औरत क्या क्या नहीं करती यार, क्या मैं वोट नहीं डाल सकती? जीते, एक तरफा जीते बिहार में। प्राइड, आई एवर गेटिंग दिस। ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग करते हैं। आम आदमी कैसे परसुएट करता है? गधा किस्म का आदमी, वो चिल्लाता है। वो क्या करता है? वो चिल्लाता है, वो चीखता है। आपको किसी को परसुएट करना है ना, तो आप चीखना शुरू कर देते हो, तेजी से बोलना शुरू कर देते हो, तुरंत रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हो, वेरी क्विकली, इवन विदाउट इंटरप्रेटिंग, सडन रिस्पॉन्स। किया होगा ना घर में कभी? हाँ, मम्मी बोल रही होगी इतना, अरे मम्मी यार आप बार बार पीछे पड़े रहते हो, तो थोड़ा सा हंगामा करके मामले को शांत कर दो कि मैं गलत नहीं हूँ। किया होगा, सभी ने किया होगा। कॉमन पीपल डू दीज थिंग्स, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। भैया दुनिया में किसी भी काम के लिए, बात बताने के लिए चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ शांति और प्यार से हो सकता है। नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। अगर कोई चीख रहा है, अगर कोई चिल्ला रहा है, तेज आवाज में बोल रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, आप मान लो कि इस आदमी के इंटेंशन कुछ और है, कुछ और इंटेंशन है। आई होप यू गेटिंग दिस। तो मैंने आपको कहा यार आपको क्लास रोज आना चाहिए, आओ आओ, ना हो तुम्हारी मर्जी, मेरी तो मजबूरी है। लेकिन इस समय तुमको क्लास आना चाहिए। अरे तो चिल्ला क्यों रहा है, ऐसे ही बोल दे अरे क्लास आना चाहिए। आई होप यू गेटिंग दिस। अगर लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बार बार चीज़ को रिपीट करते हैं, अपना बड़प्पन झाड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपको परसुएट करना चाहते हैं। आई होप यू गेटिंग दिस, यस और नो? बोथ आर टूल ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। इन दोनों से लोगों का एटीट्यूड, सोचने का रवैया बदल सकता है। सोशल परसुएशन एंड social influence and persuasion. But there is a difference between the two. There is a difference between the two. I hope you're getting this. You can write opening statement. The human's attitude is shaped by human's attitude is shaped by continuous interaction with stakeholders in the society. Continuous interaction in the society. This interaction influences the attitude. Influences the attitude. Influences the attitude. It may inculcate or change the attitude. It may inculcate the attitude or may change the attitude. And may change the attitude. Full stop. Social influence and persuasion. Social influence and persuasion are the tools, are the significant tools which influence behavior of people
which influence behavior of people. Behavior of people. Full stop. Change the paragraph. Social influence refers to the process by which an individual is a process by which an individual apostrophe s individuals thoughts belief or behavior are influenced or affected. It is a process by individuals thoughts belief behavior are affected by real or imaginary objects. Real or imaginary objects. Imaginary objects. Full stop. In simple term, social influence occurs whenever people modify their behavior because of societal objects. Everything is object in ethics. Societal objects. Fine. Everything is object. It could be a leader or a book or anything. Fine. Full stop. Change the paragraph. Sources of social influence. People's behavior. Is based on following principles. Right? For social norms. These are accepted standards of society. Accepted standards of behavior in society. You should write like this. Social norms. It is accepted standard of behavior in society. For instance, respecting elders. Celebrating cultural traditions. Standing in a queue. लाइन में खड़े होना होता कोई नहीं है. Standing in a queue. etc. Second, authority. Second is authority.
Do you know meaning of authority? If someone is on authoritative position, then people tend to follow the instruction given by that person. Yes or no? If Prime Minister is saying something, people may start following. Yes or no? If a well known researcher or scientist is asking to follow something, people may follow it. Yes or no? Your parents are saying something, you may start following it. Yes or no? And that is why all these IPs were engaged in this कि तुम जाकर बोलो तो लोग सुन ही ले शायद. If people are on authoritative position, then other people may follow the instructions given by them. Are you getting this? Yes or no? If I am asking you to write one page every day, you may not follow. You may not follow. A cabinet secretary comes and I become cabinet secretary IAS because I was writing one page daily. आप में बहुत सारे लिखना शुरू कर दे पता चले. Are you getting this? Yes or no? But teacher or trainer is also authoritative position. People may start following their instructions as well. Yes or no? मम्मी कह रही है अरे रोज लिखा करो, not listening. टीचर ने कह दिया लिखना शुरू कर दिए. It depends कि किस पोजीशन को आप authoritative position मानते हो. But obviously, if people are in authority, then their instructions are more meaningful to the people. Just like Prime Minister Modi ji, he asked people to sit at home, observe Janta curfew, and at 5 p.m. you should start. Ding, 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 ding. The country turned stupid. Suddenly, 5 p.m. everyone started beating the utensils. Few gentlemen asked, क्या कर रहा है ये? And then news wala came and they started explaining this. It is a way to encourage the people. थालियां तोड़कर पागल है. Some other explained, you stupid people, sit down. Modi is a very scientific person. When you are beating the utensils, sound waves are emitting from it. तुमको तो पता भी नहीं होगा. Waves are of two type. होती ना दो टाइप की कुछ. When you are beating the utensil, sound waves are propagating, and these waves are very dangerous for the insects, virus, and blah 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 blah. It will kill corona. I am not lying. Just search on the internet. You will get such kind of explanation. When you are beating the utensils, sound waves start propagating, and these waves are very detrimental to insects. किसी ने पकड़ा नहीं, उसकी चोटी पकड़ लेता न्यूज वाले, भाई चले गधे, इंसेक्ट और वायरस में अंतर जानता है? इंसेक्ट मतलब तू, वायरस इज समथिंग है. हाँ, ये समझ में आता है. घर में छिपकली आती हम भी करते हैं, और छिपकली भाग जाती है. कोरोना नहीं भागेगा. कोरोना भागेगा. Country turned stupid. They started beating the utensils. Someone said, it is a way to encourage our doctors. Just go to hospital and start doing this. पहले तो तुम्हारे वो कपड़े उतारेगा और फिर तुमको मारेगा. ये साले पागल हो गए. क्यों शोर मचा रहा है यहाँ पर? Smart people even don't blow horn around the hospitals. तुम कह रहे हो कि हम हमारे कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ा रहे हैं. कैसे? थाली पीट कर. लोगों ने सीरियसली लिया. हाँ, लोगों ने बहुत सीरियस लिया. पीपल बोरोड यूटेंसिल्स फ्रॉम द टेंट हाउस. ग्रुप में बजाया नगाड़ा उन्होंने. फिर सैकड़ों लोग मरे इस देश में. अगर नहीं बजाया होता तो लाखों मरते. ये तो बजा लिया तो थोड़े बच गए. नहीं बजाते तो और ज़्यादा मरते. ऐसा भी कोई कह दे मूर्ख तो बड़ी बात नहीं है. यस सर, नो. जनता कर्फ्यू के बाद आप बर्तन बजा रहे हो, पागल हो गए हो. इंदौर के लोग बर्तन बजाते बजाते राजवाड़ा पहुंच गए. आई एम वेरी ट्रू. यू कैन चेक ऑन इंटरनेट. जर्नलिस्ट आस्क, व्हाई यू केम हियर? दे सेड, वी केम हियर टू ऑब्जर्व जनता कर्फ्यू. कर्फ्यू देखने आए हैं. कर्फ्यू देखने? कर्फ्यू मतलब सब घर में बैठो, बाहर कोई नहीं निकलना. उसको क्या देखना है? तो उसको देखने इंदौर के लोग राजवाड़ा चले गए थे जनता कर्फ्यू देखने. परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. तब मोदी जी की बातें लोग सुन लेते थे, अभी नहीं सुन रहे. अभी भी कुछ तो हैं भक्त लोग, वो तो अभी भी सुन ले रहे हैं. मोदी जी आस्क्ड,
don't go to abroad, don't use don't use personal transportation, try to avoid all those vehicles which are consuming the fuel. ये इधर बोला और फ्लाइट से चले गए विदेश. नाउ पीपल आर नॉट टेकिंग हिम सीरियसली. एक दो दिन उनके मंत्री लोग बस में बैठकर फोटो वोटो भी खिंचा लिए, लोगों ने वो भी एक्सपोज कर दिया, ये साला बस में बैठा है, पीछे इसका काफिला चलकर आ रहा है, फोटो खिंचाने के लिए बस में बैठा है. कि नाउ मंत्री जी इज यूजिंग व्हाट, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अब लोग नहीं ले रहे सीरियसली. अब वो अथॉरिटी पोजीशन रही नहीं मोदी जी का. हो गया यार, 12-13 साल हो गया. लोग समझ गए कि मामला गड़बड़ है. उतना तो नहीं ये आदमी. हाँ, अब लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्टेटमेंट चला रहे हैं बार बार. Once he said, if dog is not barking, it mean there is a collusion between dog and thief. कुत्ता अगर भौंक नहीं रहा है, इसका मतलब है वो चोरों को पहचानता है. चंपत राय इज नॉट अ चोर, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ डॉग, बट आप जैसे समझो राम मंदिर में इतना बड़ा चोरी हुआ, नो वन इज बार्किंग, नो वन इज शाउटिंग, मिले हुए ही तो नहीं है. ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले इमेजिन किया था शायद, कि कुत्ता अगर चोरों से मिला हुआ है, सॉरी भौंक नहीं रहा है चोर को देखकर, तो शायद मिला हुआ हो. यस सर, नो. ऐसे नेहरू ने भी बहुत पहले कहा था, एक दिन कोई आएगा जो धर्म के नाम पे तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा. ये लोगों ने शायद फ्यूचर भांप लिया था. Great prime ministers. These two are well renovated prime minister of India. Anyway, you can write authority when. Okay, we are running out of time. मजे मजे में सब चल रहा है. 2:30 हो गया ना. Okay.